जय गुरुदेव जी। वेलकम। जय गुरुदेव। डॉक्टर निश्चय गुरुदेव। उषा जी has also joined. भैया आपकी आवाज अभी भी कट रही है। उषा जी, are you with us? उषा जी, can you hear? उषा जी, if you can hear me, open your video. अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप अपना वीडियो और अनम्यूट कर दें। मेरी आ रही है ना मिलिंद जी? जी। ऋतु, क्या आप हमारे साथ हैं? Yes, yes, I am. उषा जी ने लिखा है वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग इंतजार कर रहे हैं उषा जी के। जैसे ही उषा जी हमारे साथ वीडियो कॉल पे जुड़ जाती हैं, हम आज की चर्चा प्रारंभ करेंगे। तब तक हम शुरुआत करते हैं, 3 बार ओंकार करते हैं, करते हैं और होपफुली तब तक जय गुरुदेव एवरीवन। वी वेलकम यू ऑल। सभी का स्वागत है की पूर्व संध्या पे इस ऑन दिस न्यू ईयर वैदिक कैलेंडर। टुडे वी हैव विद अस मिलिंद गुप्ता जी, a vet to expert. We have Dr. Nishchay Nagori, an MBBS, that a prodigy astrologer, and we have Usha Kumari ji, the most
with the art of living and who has the experience, decades of experience and Jyotish. तो हम 3 बार ओमकार करते हैं और अच्छा शुरू. Let's chant Om 3 times and begin today's discussion. Let's take a normal deep breath in and breathe out. एक और साधारण श्वास लें और छोड़ दें. ओमकार के लिए श्वास लें. ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानतये निर्मलाय शांताय दक्षिणामूर्तये नमः. गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरु ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः. Let's chant Om Shri Gurave Namah before we start all together. We'll keep ourselves on mute, but chant together. Om Shri Gurave Om Shri Gurave Namah. 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 Jai Gurudev, everyone. Wishing everyone a very, very happy Vedic calendar new year. A very happy Ugadi, Yugadi, a very happy Gudi Padwa to all. सभी वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं से शुरू होने जा रहा है. आज हमारे साथ हमारे पैनल के बहुत ज्योतिषी हमारे साथ हैं. We have highly knowledgeable, wise Jyotishis with us from our panel today. We have Milind Gupta ji. He has not only done masters in Jyotish but has done a lot of research and also has also hold many PhD degrees as well. Milind ji has been doing Jyotish from past 3 decades, in fact, from his childhood. He comes from a lineage of all Vedic scholars, and we are very privileged to have him today here, Milind ji. Welcome on this panel. आपका बहुत बहुत स्वागत है. मिलिंद गुप्ता जी हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत ही सीनियर टीचर हैं. लगभग सारे ही कोर्सेज वो पढ़ाते हैं, जिसमें एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम, ब्लेसिंग्स प्रोग्राम, श्री योगा लेवल 2 प्रोग्राम भी सम्मिलित हैं. थैंक यू. जय गुरुदेव आशुतोष भैया. जय गुरुदेव व्यूअर्स. जय गुरुदेव. आप सभी का नव वर्ष की पूर्व संध्या पर बहुत बहुत स्वागत है. और हमारे साथ में है डॉक्टर निश्चय नागोरी. We have with us Dr. Nischay Nagori, who is not only an MBBS MD doctor, but is a child prodigy in Jyotishi and Shastras. He has done a lot of research in the field of Jyotish and published a lot of papers and presented these papers in the most reputed medical council, astro medical councils as well. So we are very proud and very happy to have you today, Nischay ji, with us. And we have with us our veteran Jyotishi, Usha Kumari ji, who has been with us from the beginning of the department of Jyotiṣ and Vāstu with Art of Living. She has not only taught many senior Jyotishis who are popular these days, but she has also been teaching all the Gurukul students in our Bangalore Ashram Gurukul as well.
Usha ji has a vast experience, more than 3 decades of experience in Jyotish, in teaching and counseling and consulting through Jyotish methods. Usha ji has also been a resident astrologer with us. We welcome you, Usha ji. We're glad to have you here today in this discussion. So today's topic is very interesting. Tomorrow the new year is beginning. आज का बड़ा रोचक टॉपिक है. कल से नव वर्ष की शुरुआत होने वाली है और जब नव वर्ष आता है, when the new year is approaching, we are all keen and eager to know what new year holds for us. जब भी नया वर्ष आ रहा है, हमको हमेशा ये उत्सुकता रहती है कि नव वर्ष हमारे लिए क्या लेकर के आ रहा है. हम जानना चाहते हैं कि संसार में क्या होगा और हमारे साथ हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं इस नव वर्ष के साथ साथ. तो आज इसी चर्चा को लेकर के हम आपके सामने आए हैं हमारे विद्वानों के साथ. और चर्चा की शुरुआत, हालांकि ये एक परंपरा रही है, दिस हैज बीन अ ट्रेडिशन दैट व्हेनेवर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द प्रेडिक्शंस फॉर द न्यू ईयर, वी स्टार्ट विद पंचांग श्रवणम. हमेशा से इस चर्चा की शुरुआत पंचांग श्रवण से ही होती है. तो हम मिलिंद जी को रिक्वेस्ट करते हैं. मिलिंद जी, वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रीड द पंचांगा फॉर द कमिंग संवत्सरा व्हिच इज कॉल्ड क्रोधी संवत्सरा. काइंडली एनलाइटन अस ऑन दिस. थैंक यू. नत्वा गणपतिं खेटां ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकां संवत्सर फलं वक्षे सर्व कामार्थ सिद्धये. सर्व काम के सिद्धि के लिए ये पंचांग का श्रवण बहुत आवश्यक है. और जितने भी लोग इस पंचांग का रोज श्रवण करते हैं और विशेष करके संवत्सर की प्रारंभ में यदि हम हमारे पंचांग का श्रवण करते हैं तो हमारे हर एक कार्य की सिद्धि होती है, ऐसा वर्णन है. तो इसी के साथ में हम इस पंचांग का श्रवण करते हैं. हमारा जो पंचांग है, इसका नए संवत्सर, हमारा नया साल जो शुरू हो रहा है, इस नए संवत्सर का नाम है क्रोधी संवत्सर. और हमारा इस देश का जो अभी नया संवत्सर शुरू हो रहा है, ये मंगलवार के दिन शुरू हो रहा है. और इस वजह से हमारे जो राजा है वो मंगल देव है. इसका एक अपना मंत्रिमंडल होता है, इसका अपना एक मिनिस्ट्री होता है. तो इसके पोर्टफोलियो इस प्रकार है. तो राजा का जो पद है, इस पूरे साल में, इस पूरे नव संवत्सर में, क्रोधी नाम का जो हमारा संवत्सर है, ये मंगल देव विभूषित करने वाले हैं. उनके पास में और 2 पद है, जो कि एक कहलाता है नीरसाधिपद. नीरसाधिपद यानी क्या कि विच इज द रूलर ऑफ इसेंस विच डू नॉट नरिश. मतलब वो सारी चीजें जो हमारा पोषण नहीं करती है लेकिन एग्जिस्टेंस में है, उसके भी अधिपति मंगल देव है. और साथ ही साथ सस्याधिपति, मतलब जो फूड है, जो खाना होता है, भोजन होता है हर एक प्रकार का, उसके अधिपति भी मंगल देव है. और उसी के साथ ही इनके मंत्रिमंडल में मंत्री पद जो है, द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर विल बी हेल्ड बाय शनिदेव हिमसेल्फ. शनि देवता जो है वह न्याय के देवता कहे जाते हैं. एंड अलॉन्ग विथ हिम शुक्र देव जो है, वीनस, इनके पास में 3 पद जो है वो विभूषित है. एक है सेनाधिपति, एक है मेघाधिपति और अर्घ्याधिपति. सेनाधिपति मतलब क्या, वो हर एक चीज का आगे बढ़ने के लिए, निर्णय लेने के लिए जो सक्षम होते हैं, हाँ, जिस आपके पास में जो ताकत होती है उसका वो कंट्रोल करते हैं, स्पीयर हेड करते हैं, वो कहलाते हैं सेना नायक. तो आपके पास जिस भी प्रकार का फोर्स है, ज्ञान है, उसके अधिपति इस साल के लिए रहने वाले हैं शुक्र देव, जो कि आपको वैभव, संपत्ति, ऐश्वर्य दिलाते हैं. और यही विशेषता है. आपके पास अगर कोई विशेष गुण है, कोई विशेष सामर्थ्य है, शक्ति है, तो उसको शुक्र देव अपनी ताकत दे रहे. तो आप इस साल अपने सामर्थ्य से पैसा कमा सकते हैं, वैभव, ऐश्वर्य, नाम, सब कुछ कमा सकते हैं. मेघाधिपति मतलब जो आसमान में बादल आते हैं, उसके जो अधिपति है वह भी शुक्र देव है. तो हम लोग एबेंडेंस के साथ में बारिश को एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अर्घ्य, जो जमीन के पानी है, उसके भी अधिदेवता शुक्र है इस साल. सूर्य देव इस साल धान्यपति है, रूलर ऑफ इसेंस विच नरिशेस, मतलब जो ऐसा भोजन जो हमें नरिशमेंट देता है, हम जो भोजन करते हैं वो सूर्य देव की ही कृपा से होता है. सनलाइट के बगैर हम लोग भोजन को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं. और गुरुदेव जो है वो रसाधिपति है. रस यानी क्या, जो हर एक नेक्टर में बह रहा है,
वह कहलाता है रस। तो ऐसे ये मंत्रिमंडल जो है ये हमारे इस साल का रहने वाला है। चंद्रदेव और बुध देव के पास में इस साल कोई पोर्टफोलियो नहीं है। इस साल की विशेषता ये है दैट मार्स एंड सैटर्न दे बोथ आर स्टेइंग टुगेदर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इन द थर्ड हाउस। और इससे क्या होने वाला है भाई, हमारा जो पूरा का पूरा अभी हॉरोस्कोप है ये एक विशेष तरह से एक खास घटना को इंगित कर रहा है। हमारी अभी की जो कुंडली है उसमें अगर हम देखेंगे तो हमारे 9 ग्रहों की पोजीशनिंग इस तरह से है थर्ड हाउस में। यस आशुतोष जी, आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी मिलिंद जी। थोड़ा साथ में अगर इंग्लिश में भी बताएंगे तो हमारे इफ यू कैन स्पीक लिटिल बिट इन इंग्लिश, देयर आर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज आल्सो हु आर वाचिंग अस, so राइट if you can just list down the portfolio in English once, that'll be very helpful. right. So the ministry of this new particular year which is named Krodhi is like this. Mars is having a 3 portfolio. First one is the portfolio of the Lord, the King himself, Raja. Then he is also holding the portfolio of Nirasadipati and Sasyadipati, ruler of the essence which do not nourishes and ruler of food. Then Saturn holds the portfolio of the chief minister, the mantri. Venus also holds the portfolio, 3 portfolios. One is Senadipati, which is the commander of the army. Then second one is the Meghadipati, ruler of the clouds, and Arghadipati, which indicates the ruler of the water, groundwater. Sun is holding the post of Dhanyadipati, which is called the ruler of the grains, the food that we consumes. And Guru Jupiter is holding the post of Rasadipati, ruler of all the things which nourishes us. And Moon and Mercury, they are not holding any post in this particular Krodhi Samvatsara. And the position, shall I also mention the positioning of the planets in the Varsharambha, Ashutosh ji? Yes, sure. But before we move on to this, can you please talk a bit about, because when we are saying that if this particular planet is ruling this portfolio, can we say that pleasing this planet will help us bring abundance in that area of life this year? Of course. Because if the Lord is happy, then we can expect whatever he is having, he can give all those things which is having in abundance. So if your master is happy with a particular thing with you and he is holding something, he is bound to offer all those things to you. So if the Lord of that particular portfolio is happy and you are doing certain things to please those planets, then of course you are bound to get all those planets. So all those who are with the farming business, then the pleasing of Guru and Sun will definitely, it is going to help them. All those who are having a prominent Sun in their horoscope, they are bound to get profit in this particular year. Oh, very nice. Now we can move on to the planetary position, the entry chart of this year. Can you hear me? Am I audible? Am I audible to everyone? Yeah, so let's move on to the entry chart of this year. Okay, so the positioning of the planets in different houses are like this. So we are having Dhanu ascendant. Dhanu is the Sagittarius. Ascendant is the very first house of our horoscope. And positioning of other planets are like this. हमारे कुंडली में सबसे पहला स्थान जो होता है वो लग्न कहलाता है और वर्ष प्रवेश के आरंभ में धनु का लग्न माना जाता है। धनु इस राशि को गुरु ग्रह जो है, गुरुदेव जो है, वह उसके अधिपति है, उसके स्वामी हैं। और हमारी जो वर्ष कुंडली है वर्षारंभ में ये इस प्रकार से है। शुरुआत में तीसरा जो घर है वहां पर 2 ग्रह उपस्थित है जिनके पास में पूरी सत्ता की चाबी है, मंगल और शनि। ये दोनों ग्रह जो है
ये हमारे तीसरे घर में उपस्थित है, जो कि पुरुषार्थ का, साहस का, वैलर का, हमारे जीवन में जो बड़े निर्णय हम लेते हैं उसका ये घर है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में भारत देश में, पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में कुछ ऐसे बड़े अच्छे निर्णय लिए जाएंगे, अभूतपूर्व निर्णय लिए जाएंगे। इसके साथ ही दोनों ग्रह जो है, मंगल और शनि, ये सेनापति ग्रह है, ये ताकतवर पराक्रमी ग्रह है। तो हम लोग भारत की सैन्य शक्ति में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि मंगल जो है वो अभी राजा है। जब कभी भी सेनापति कभी राजा बनता है तो वो अपने पराक्रम को, शौर्य को और बढ़ाना चाहता है। तो वैसे ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भारत का गौरव संपूर्ण दुनिया में फैलेगा। उसी के साथ ही जो देश क्या कहते हैं, प्रभुत्व रखते हैं, वह भी दुनिया में आगे बढ़ चढ़कर कुछ नए निर्णय ले सकते हैं। जिन देशों का ऑलरेडी प्रभुत्व सारी दुनिया में है, टॉप 4-5 कंट्रीज जो है, वो और भी कुछ बड़े निर्णय, चौंकाने वाले निर्णय सारे दुनिया में ले सकते हैं। चौथा घर जो है, यहाँ पर 5 ग्रह एक साथ उपस्थित है, सूर्यदेव, चंद्रदेव, शुक्रदेव और राहु। और पंचम स्थान में बुध और गुरु, ये दोनों ज्ञान देने वाले ग्रह यहाँ पर उपस्थित है। इनका जो भविष्य कथन है, ये हमारे एक्सपर्ट लोग पैनल आने वाले इसमें करते जाएंगे, ऐसे हम आशा करते हैं। ओवर टू यू आशुतोष जी। मिलिंद जी, थोड़ा सा इसको if we can talk a bit in English also about the planetary Right. positions and how it is going to impact the world. Right. So the positioning of the planet is like that. The ascendant sign is Sagittarius, and Mars and Saturn. These two planets are placed at the in the third house. Third house is known for valor, for making the major decision of your life. So because these two planets are present simultaneously in this third house, we can expect some of the major decisions in throughout the world. All the leading countries can take some of the decisions which could literally bring the transformation. It could be surprising decision for the world also. And in the fourth house, we have 5 different planets: the sun itself, moon, Venus, and Rahu. We can expect a mixed result because of the conjunction of these 5 planets. And the fifth house is having 2 planets, Budh and Guru. So the presence of Mercury and Jupiter, we can expect lots of growth in the knowledge sector. Those who are in the knowledge sector and those who are studying can expect something new from the field of knowledge, some new innovation. Definitely we are going to have in coming days. Amazing. Yeah, and the 10th house, yes. We are having Ketu. So Usha ji, would you like to add something to what Milind ji has shared? कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप मिलिंद जी ने जो बताया है उस पर? Yeah. Jai Gurudev. Wish you all happy Yugadi and Gudi Padwa. Milind ji has explained very beautifully. That's of course this new year, that is Yugadi, is going to start in Dhanur Lagna, and Kuja and Shani in the 3rd house, Surya, Shukra, and Rahu and Moon in the 4th house from Lagna, and Guru and Buddha in the 5th house, Ketu in the 10th house. All this planetary combination, as the Lagna of this new year is Dhanur Lagna. The Lord of Dhanur Lagna is Guru. Guru, being posited in Mesha, is aspecting the Dhanur Lagna. That is, Guru grace is there upon this Lagna. Irrespective of any challenges we get, any problem happens, as Guru grace is there, this whole year is protected. So Guru Drushti is very important, that Guru Drushti is there, number 1. Number 2, of course, in the house of Parakrama, Kuja and Shani, they both are there. They both are together within 1 degree. And this combination, like there may be like as Milanji already said, that the warriors are going to become strong.
And, because Mars is the Lord of the year, and he is going to, encourage for the strength of the army, navy, all this, the fight, what do you say that? Sainya, the whole, युद्ध के लिए, whatever strength we need, that he is going to make strong. So that is also very good. And Guru and Buddha being in the 5th house, of course, as Milan ji has already told, that it's very good for higher education, spiritual growth, and even in invention, inventing new things. For all that is very good. Ketu being in the 10th house, of course, that is also good. So though Ketu is a plant which has no head, being in the 10th house, spiritual growth, and people will have more interest in learning new things. This is what the Ketu is indicating. So this is a very good year. Happy Yugadi once again. In fact, Usha ji, as you have pointed this is very interesting to note that the Lagna Lord is Jupiter, and the nourishing Lord is also Jupiter. The one who is nourishing is also Guru. And the 10th house, Ketu is present. Ketu is the planet of all sannyasis and spiritual people. So it looks like that this year the king is going to be more focused because it is not nourishing. The king is more focused. He's the ruler of non-nourishing things. So the king is going to be more focused on expanding boundaries or proving their valor to the world, kings and the ministers. However, the gurus and the spiritual people will be the one who are going to hold the nourishing aspect this year. So all those who are inclined towards spirituality, who are into spirituality, this is going to be a very good year for you. Yes. Nishya ji, anything would you like to add? Just one thing, that yes, Guru and Buddha are together, but Buddha is Vakri right now. So you need to be careful about what you are speaking, because this is the time when most of misunderstanding arises due to your words. So please be careful whatever you are speaking, and this is a generalized thing for everyone. Okay, so this year, this is a domain which you need to be careful. Second thing is, since Mars and Saturn are together, they are actually natural enemies. Okay, so there are chances that since Mantri and the king, minister and king, both are in a natural conflict with each other, and they both are equally powerful. So yes, the big decisions will be taken, but there will be rifts between the ministers and a lot of political changes we are going to see. Politically, the whole world's order is going to change, and any change in the political order will definitely going to impact for decades, because this is the time when we see previously when this happened, before World War II also this happened, that a big political change occurred and how we saw the events. And meanwhile, before that also, whenever we see the Mars and Saturn together and the year is starting, on that point, political changes takes place, which impact for a long time. In fact, Surya being with Rahu, Surya and Chandra being with Rahu this year, it is a Grahan Yugadi. So Grahan Day, Yugadi, Surya and Chandra, both these grahas indicate or represent the royal people or the people in politics. And because it is with Rahu, it is a good possibility that some scandal of a politician might come out, or some life-threatening event might occur in terms of politics. However, the good thing is that Shani and Mangal, when we are talking about two parties fighting for a position, we always look at who is in the defending side, who is in the challenging side. Saturn being the defender and Mars being the challenger, and Saturn being of more strength. So it again looks like the current party is going to prevail for the next term also for the election results. So end of the day, things are in more favor. The Yugadi day itself indicate that things are going to be more in the favor of the existing ruling party. So that's about the world. ये हमने समाज के बारे में, संसार के बारे में तो बहुत बात कर ली. अब हमारे दर्शक जो सबसे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और ऑडियंस इज ईगरली वेटिंग फॉर द राशिफल. How is going to be the next year for their Chandra Rashi?
अगला साल आपकी चंद्र राशि के लिए कैसे होने वाला है। तो ये जो भी भविष्य फल हम बताने वाले हैं, वर्ष फल बताने वाले हैं, ये आपकी चंद्र राशि पर निर्भर करता है। ऑल द प्रेडिक्शंस वी आर गोइंग टू मेक फॉर योर साइन इज बेसिस योर मून साइन। हाउ टू फिगर आउट योर मून साइन, अपनी चंद्र राशि कैसे देखें, इसके ऊपर हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे हमने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, आप प्लीज उसको रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। पर हम जब यहाँ बात कर रहे हैं तो आप अपनी चंद्र राशि से चलेंगे, सूर्य राशि से नहीं चलेंगे, ना लग्न से चल रहे हैं, हम खास तौर पे चंद्र राशि की बात कर रहे हैं। तो उषा जी, आपसे से शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू। व्हाई डोंट यू शेयर सम लाइट हाउ दिस ईयर इज गोइंग टू बी फॉर एरीज मून साइन पीपल, मेष राशि वालों के लिए साल कैसा रहेगा? Yes, of course, all of us know, like Nishchay ji, Ashutosh ji, and Milan ji, everybody explained about this new year, how it is going to be. I would like to add one more thing in this matter, that, the Lagnadipati Guru and Dashamadipati Buddha, they both are in the 5th house. That is a Trikona Sthana, Lakshmi Sthana we call it. It is very good. Kendradipati and, being Trikonadipati, Guru being the Lagna Lord, is a Trikonadipati. Buddha being Kendradipati, together in the Trikona Sthanam is very good. So this one thing we have to give much importance. Number 2 is that Surya being with Rahu, as a Grahan happened just before Yugadi starting. So this year for Surya, if people chant Aditya Hridayam and even Surya Graha Bija Mantra is very good. And anyway, from 1st May onwards, Guru is going to enter Vrishabha, so things are going to change slightly. Now, I'm going to talk about Aries moon sign. Okay, that is Mesha Rashi. People who are having moon in Aries, for them, in this year, as at the time of the new year, Jupiter and Mercury both being in their Lagna, in the Rashi itself. All this, the whole 1 year, they had some tough time, of course. Maybe like, when Jupiter enters moon sign, Aries, people of Aries, they might have experienced a lot of, responsibility in their life. But from 1st May, they are going to see lots of good things happening in their life. So bright future is there ahead, number 1. Number 2, Saturn at the time of the new year, Saturn being the Lord of 11th house, posited in the 11th house itself, and aspecting the Lagna is good. And even one more thing they had to notice, the Aries moon sign people, being 5th Lord Surya is in the 12th house, is not that good. For that, generally they have to chant Aditya Hridayam and Surya Graha Bija Mantra. Some remedies they can do, because Surya was in the eclipse just before the year started, and he's a 5th Lord as well. There they have to take a little bit care. Otherwise, Ketu is in the 6th house, very good. So they can take challenges and they can win over the challenges. Ketu being the, malefic planet, being sitting in the 6th house, they can win over their challenges. And also, Mars, Rashila, is also posited in the 11th house, is very good, but is associated with Saturn. This is not that good combination. It is good for them to perform Rudrabhishekam at least once in a month on Mondays. This is for Aries moon sign. उषा जी, थोड़ा हिंदी में भी बताएंगे हमारे हिंदी के दर्शकों के लिए? Okay. अगर आप बता सके, if it is easy for you. Yeah. Mesha Rashi people, for them, मेष राशि लोग है ना, पूरा साल गुरु तो राशि में था। अब इस मई 1 से गुरु वृषभ राशि जाने वाला है, इसीलिए क्या होता है, गुरुबल मिलता है मेष राशि लोगों को। यदि विवाह नहीं हो गया है तो विवाह होता है, यदि कोई अच्छा कर्म करना है तो कर सकते हैं इस साल। बहुत बर्डन कम होता है, एक बात। दूसरा बात है कि शनि है ना, शनि 11वां घर में बैठा है, अपना घर में ही बैठा है। शनि 11वां घर में बैठता है ना, तब गोचार में बहुत अच्छा फल तो मिलेगा। वैसे उसी तरह मंगल भी राशि का अधिपति है, वो भी 11वां घर में बैठा है ना, ये भी अच्छा है। फिर भी शनि और मंगल दोनों एक साथ बैठते हैं ना, ये इतना अच्छा नहीं है।
इसीलिए इसके लिए आप महीने में एक सोमवार रुद्राभिषेक करने से थोड़ा मंगल को और शनि को भी शांति मिलेगा। और केतु षष्ठ घर में बैठा है। केतु षष्ठ घर क्या बोलते हैं? शत्रु के बारे में बोलते हैं, चैलेंजेस के बारे में बोलते हैं। यदि कोई चैलेंजेस आएगा तो वो चैलेंजेस ले सकते हैं, दे कैन विन ओवर द चैलेंजेस, है ना। इतना अच्छा है। मगर इधर एक थोड़ा अच्छा नहीं है, ये तो सूरज 12वां घर में बैठा है, मेष राशि से राहु के साथ बैठा है। चंद्रमा भी वहां बैठा है। एक कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं है। इसीलिए सूर्य के लिए, सूर्य तो मेष राशि लोगों को 5th लॉर्ड है ना, पंचमाधिपति, पूर्व पुण्य स्थानाधिपति 12वां घर में बैठा है, इतना अच्छा नहीं है। इसलिए सूर्य का मंत्र जप करना, नहीं तो आदित्य हृदय में पढ़ना भी अच्छा है। बहुत अच्छा जी, बहुत सुंदर जी। निश्चय जी, आप थोड़ा वृषभ राशि के ऊपर प्रकाश डालिए। व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट टॉरस मून साइन? Okay, so for Taurus moon sign people, this year we'll talk about three aspects. First, career, then the relationships, then health, and fourth is spirituality. Sorry, four aspects. So let's talk about your career first. Since the 12th and the 9th lord are together in the 10th house, this indicates that there will be frequent change in the career, or a change of place can be there. That means transfer can happen, and that there can be like frequent change in place, which is observed. Second thing, if you are planning to move abroad for your career, then this year will support you to the best, because 9th and 12th lord are together. Also, Rahu Ketu are in the 5th and 11th axis, and Rahu in the 11th house is there along with the 4th lord and the Lagna lord, with the Shukra being exalted in the 11th house. So, for income also, this year will be best, because the income is going to increase, especially if you are in the marketing field. This year will support you best. And also, if you want to move abroad, this year is best for you. Okay. Second thing about your relationship, little bit challenges will be there, because the 7th and the 10th lord are together. So during these times, and they are both of equal strength. So between work and married life, there is a constant struggle. You are not able to manage it. So this time you have to focus on both the sides. Okay, don't miss one side. Otherwise, a lot of problems will arise in the married life and relationships. Okay. Third thing about your health, since the Badaka is going to be there in the 10th house, the problems of knees, arthritis can increase. Also, the Mars is aspecting the 5th house where Ketu is already present. So the Agni is going to face disturbances, because the Saturn's effect is going to increase the Vata dosha, and the Mangal and Ketu are going to increase the Pitta. So both Pitta and Vata dosha will come in cycles. So this time, please be careful about what you are eating. If you are having any of the dosha, you need to take care of your diet to the best you can. Okay. And regarding spiritual growth this year, if you are having any mantra, then please do practice it. Especially if we are practicing Sahaj regularly, this is the best thing for you, because Jupiter is there in the 12th house, which indicates the best meditations during during this year. Also, if you are a student and you are aspiring for foreign education, this year will support you. But regarding studies, this year will be challenging, because the 5th lord is actually not supporting you this year. Also, the Ketu is present in the 5th house, which will not let you study and throw some challenges. So it's best for you that you are meditating on Vishnu Sahasranam daily. हिंदी में थोड़ा बता देते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए इस साल, पहले अगर हम उनके कार्य क्षेत्र करियर की अगर हम बात करें, तो ट्रांसफर या चेंज ऑफ पोजीशन ज्यादा दिखाई देता है। ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा, फॉरेन जाने के चांसेस अच्छे हैं। अगर आप बाहर विदेश यात्रा के लिए प्लान कर रहे हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो अच्छा आपके लिए रहेगा ये साल। तीसरी चीज, आपका जो फाइनेंसेस है वो बढ़ने वाले हैं। और अगर आप मार्केटिंग के फील्ड्स में, तो ये साल आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। अगर हम आपके वैवाहिक संबंध की बात करें, तो उनमें थोड़ी परेशानी रहेगी, क्योंकि सप्तम और 10वें
मालिक जब एक साथ होते हैं तो हमेशा आप डिसाइड नहीं कर पाते, और उस वजह से दोनों को आप सपोर्ट नहीं देते हैं तो थोड़ा मुश्किल होती है। काम की वजह से वैवाहिक संबंध में प्रॉब्लम्स आती है इस समय। कि तीसरी चीज, जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा फोकस कर पाना, तो विष्णु सहस्त्रनाम उनको डेली सुनना चाहिए। और जो लोग भी अपनी आध्यात्मिक गति चाहते हैं, जो वृषभ राशि के लोग हैं, उनको ध्यान करना चाहिए। सहज इस साल 2 बार दिन में जरूर से करना चाहिए, वो नहीं चाहिए। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद निश्चय जी। मिलिंद जी, मिथुन राशि के बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। मिथुन राशि की अगर हम चर्चा करते हैं, मैं क्रिस्ट करके बताता हूं, क्योंकि ग्रहों का जो प्रतिक्रमण है, ट्रांजिशन है, शायद लोगों के समझ में नहीं आएगा। तो सामान्य लोगों के लिए, जिन लोगों की मिथुन राशि है, उनके लिए ये वर्ष एवरेज सामान्य शुभदायक रहेगा, कई बार मिक्स रिजल्ट्स भी देगा। रुके हुए काम बनने की संभावना है, और शत्रु पक्ष से विशेष रूप से सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके छठे घर का स्वामी स्वगृही शनि के साथ में वहां पर बैठा हुआ है। कुछ स्वास्थ्य रिलेटेड इसी वजह से समस्याएं भी आ सकती है, पेट संबंधित। थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। आपको मित्रों का सपोर्ट मिलते रहेगा, क्योंकि 11वां घर आपका बहुत अच्छा है। और इस साल जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है। शिक्षा से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको प्रगति मिलेगी। कृषि क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको लाभ होगा। नौकरी वालों को भी अच्छा लाभ होगा। दशम स्थान जो है ये 4 ग्रहों को इकट्ठा लेकर चल रहा है, तो मिक्स रिजल्ट्स मिल सकते हैं आपके ग्रहों की ताकत के हिसाब से। दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा आपको देखकर चलना है, क्योंकि सप्तम स्थान का जो स्वामी आ रहा है, वो क्या कहते हैं, इस वर्ष थोड़ा आपको तकलीफ देने की एक स्थिति में आएगा। और इस साल के अगर आप कुछ विशेष हिंदू भारतीय अगर महीनों की बात करें, उसमें थोड़ा विशेष ख्याल रखिएगा, जैसे ज्येष्ठ मास, श्रावण मास और फाल्गुन मास। तीसरा, पांचवा और 12वां जो मास होगा वो थोड़ा कष्टप्रद हो सकता है। For the people, those who want in English, the Gemini people, they will have a normal and a mixed sort of, they will get a mixed sort of result for this particular year. Regarding, you have to be aware regarding the activities of your enemies, and you have to be alert for your health. Any decision which is taken in haste or without given a proper thought could land you in trouble. You have to be more cautious also for money related matter. And people, those who are in job or those who are with the dealing with the properties, they can expect a nice growth in their business. And people, those who are already in the field of knowledge sector, they can also a nice growth. So this is for the Gemini. Great. Thank you so much, Milind ji. Usha ji, why don't you talk something about Cancer or Karka Rashi? Yeah, people who are born Cancer moon sign, for them, that Lord of that Cancer sign, moon, is posited in the house of luck is very good. Along with the Lord of Dhanadipati, that is Surya, with Rahu. This is indicating those people who are born in Cancer moon sign may earn good money this year. Number 2 is that Guru being in the 10th house, of course, they will take more responsibilities in their job, but still they are going to get good blessings and grace of Guru, because Guru is going to move to 11th house. This is very good. And Ketu being in the 3rd house at the time of the new year, very good for traveling, to visit, different Tirtha Yatra places, like pilgrimage places. They can go to temples. That is also very good. Only thing is that what I recommend for Karka Rashi people, that is Cancer moon sign people, as Surya, Shukra, Rahu are together in the 9th house, worshipping Devi Ma is good. Durga Ma, yeah, Kalika Ma, any Devi Ma, they have to worship. That's very good, because 9th house has Shukra, Surya and Rahu. This is very good. One more thing, this Karka Rashi people have to be careful, because in their 8th house, Shani and Mangal are there. This is not a good combination. These people have to be careful while traveling, because at the time of the new year, this combination is there. Of course, Mangal is a yoga karaka for
Karka Rashi people, but still Mangal being associated with Shani is not that good. Shani, of course, in the Ashtamasthana, we call, Ashtama Shani. This is also not good. Performing some remedies for Shani and Mangal is very good for them. Otherwise, everything is very good. I'll tell you in Hindi as well. So, लोग कर्क राशि में पैदा हो गए ना, उन लोगों को चंद्रमा नवम स्थान में है, मतलब भाग्य स्थान में है। इसके साथ सूरज भी है, राहु भी है। सूरज तो धनाधिपति है, लग्नाधिपति और धनाधिपति राहु के साथ नवम स्थान में है, तो इस साल पैसा के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा बात, गुरु और बुध दोनों भी इस नव वर्ष में एक दो साथ बैठे हैं दशम स्थान में। ये भी अच्छा है काम के लिए, फिर भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा ही होता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थोड़ा कम होता है मई 1 के बाद में। गुरु का बल भी मिलेगा। तीसरा बात है कि केतु तृतीय स्थान में संचार कर रहा है, ये भी अच्छा है तीर्थयात्री के लिए। और अष्टम स्थान में शनि और मंगल दोनों बैठा है, ये इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए शनि और मंगल को थोड़ा उपाय करने से ठीक हो जाएगा। और सूरज और शुक्र राहु तो तीनों भी मिलकर नवम स्थान में बैठा है, इसीलिए दुर्गा माँ को पूजा करेंगे ना, तब अच्छा होगा। ठीक, थैंक यू सो मच उषा जी। निश्चय जी, प्लीज टॉक अबाउट सिंह राशि, Leo moon sign. So for Leo moon sign people, first thing is that the anxiety is going to increase because the Mars is there in conjunction with the Saturn. Also in the 8th house, Rahu is there. Sleep disturbances are going to increase. So please take care that you are sleeping well on time, and please take care of your sleep cycle. Second thing, that marital disturbances slightly can be there, but also since Mangal is the Badaka, it is affecting the Saturn, which is the 7th lord itself. The problems of kidneys can increase, urogenital problems can be there. So please drink a lot of water, plenty of water you need to drink. And also Rahu in the 8th house will give you a lot of focus on the disease and slightest symptoms you get. The anxiety of body is going to increase. So just meditate a lot and meditate on Mooladhara Chakra daily so that you are free and relieved from your anxiety. Work in the gardening and also plant some trees, do something for the land so that your anxiety is reducing and Mars is coming to the normal, the Mooladhara Chakra is coming to center in your life. Okay. हिंदी में थोड़ा बता देते हैं कि जो भी सिंह राशि के लोग हैं, आपके लिए इस साल एंजाइटी बहुत ज्यादा रहेगी, क्योंकि मंगल और शनि एक साथ है, राहु जो है वो अष्टम स्थान में, ये दोनों के दोनों नींद भी खराब करते हैं और उसके साथ में मूलाधार चक्र को डिस्टर्ब करते हैं। तो आपको मूलाधार चक्र पे रोज ध्यान करना चाहिए, गार्डनिंग करनी चाहिए और मिट्टी में हाथ रखना चाहिए, नंगे पांव चलना चाहिए गार्डन में, जिससे आपका मूलाधार चक्र और पृथ्वी तत्व बैलेंस में रहे। नहीं तो आप कोई भी निर्णय नहीं ले पाओगे। सप्तम अष्टम स्थान पे लोड ज्यादा है, तो अष्टाक्षरी मंत्र का आपको हमेशा जाप करना चाहिए, तो जिससे क्या है कि जो भी दुष्प्रभाव है वो अपने आप दूर होंगे। जो शरीर को लेकर चिंताएं आपको बार बार बन रही, वो अपने आप दूर होती जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, अच्छा है, गुरु और बुध एक साथ हैं और गुरु जो है वो पंचम स्थान को देख रहे हैं, तो शिक्षा के लिए ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल, भाग्य के जो देवता हैं वो आपकी वाणी से जुड़े हैं और वो वक्री हैं, तो बोलने पे ध्यान रखें, वरना आपके बनते हुए काम बिगड़ सकते। बहुत बहुत धन्यवाद निश्चय जी। मिलन जी, विल यू प्लीज शाइन सम लाइट ऑन वर्गो मून साइन, कन्या राशि के बारे में थोड़ा बताएं। Kanya Rashi. Okay, those who are Virgoians, they have to be extra super cautious this year because in the 7th house there will be Rahu, Chandra, and Shukra. Surya will also be there, and the cart of the life go hand in hand along with the life partner. ये 7वां जो स्थान है, यहाँ पर जो भी इतने सारे ग्रह उपस्थित है और एक दूसरे को ये ग्रहण बना रहे। सूर्य चंद्रमा दोनों एक दूसरे से टोटली विपरीत स्वभाव रखते हैं,
राहु होने की वजह से ये ग्रहण योग बना रहा है, मन को भी खराब करेगा और हमारे एग्जिस्टेंस, हम जो बाहर की दुनिया में वाइब्रेंट होते हैं उसको भी वो प्रभावित करेगा। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। अगर आप इस तरह के दौर से गुजर रहे हैं तो अपने मेजर डिसीजंस को कुछ समय के लिए टाल दें। दिस इज व्हाट इज माय सजेशन। Also, because the sixth house is having Mars and Shani, so your enemies could be dominant at this time. कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं। थोड़ा शनि देव को प्रसन्न करिए, मंगल देव को प्रसन्न करिए, तो हमारे बने हुए काम जो है वो बन सकते हैं। अष्टम स्थान में गुरु और बुध बैठे हुए हैं और बुध वक्री है। जैसे हमारे निश्चय जी हमें बता रहे हैं कि वक्री बुध के वक्त में ना वाणी पर कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि कई बार हमें नुकसान होता है क्या चीज नहीं बोलना चाहिए इससे। और ये अष्टम स्थान में बैठा हुआ है नाउ, बिकॉज द मर्क्यूरी इज रेट्रोग्रेडेड एंड प्रेजेंट इन द 8th हाउस, मोर डैमेज कुड बी डन बिकॉज वी आर सेइंग द थिंग विच आर नॉट सपोज टू बी सेड एट दैट टाइम। सो इफ वी टेक केयर ऑफ आवर वाणी, देन प्रेजेंस ऑफ गुरु विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। गुरु जो है वो अपने आप में सक्षम होते हैं हर तरह के अरिष्ट को भंग करने के लिए। तो गुरु अष्टम स्थान में आपकी स्थिति को संभाल लेंगे, एंड बाकी सारी चीजें जो है वो इस साल आपको मिक्स रिजल्ट देने वाली है। Thank you so much, Milind ji. Usha ji, we'll come back now. Your turn again. So, if you can shed some light on Tula Rashi. How is this year going to be for Libra moon sign people? Yeah, for Libra moon sign people, this year, according to this planetary position of Yugadi Day, that is still Guru Drishti is there on the day of Yugadi on their moon sign. So the year is still blessed, number one. But after 1st of May, when Guru moves to the 8th house, this we call as Ashtama Guru, this is not that good. So on that day, if they perform Guru Shanti Homa, it's really good for them, number one. Ashtama Guru, they may entertain lots of responsibilities in their job, in their personal life. Number two, Shukra, being their Lagna Lord, is sitting in the 6th house along with Surya and Rahu. For Tula Rashi people, Surya is a Bhadakadipati, and Shukra being Ashtamadipati as well. Sitting in the 6th house is good, but being like Rashi Lord sitting in the 6th house is not that good, with especially with Rahu and Surya. For this Shukra Graha, to make it positive, chanting Shukra Graha Bija Mantra is good for them. And number two, for them, Mangal, being the planet which tells about their finance and their life partner, is posited in the 5th house with Shani. It's not that good combination. Therefore, for them, they should not argue with their spouse. They have to be very careful before spending money. They have to take care of their children. And then Ketu in the 12th house for spiritual growth. For Tula Rashi people, it's very good. Otherwise, they are safe, because Guru is there and they're in the 7th house at the time of Yugadi. हिंदी में बोलती हूँ। अब तुला राशि लोगों को अभी युगादि शुरू होने के वक्त गुरु तो मेष में ही है, ये तो अच्छा बात है। गुरु का दृष्टि उसका राशि के ऊपर तो है, मगर यही गुरु 10 दिनों के बाद, मई 1 के बाद क्या वृषभ में जाएगा, तब गुरु बल नहीं होता है, अष्टम गुरु बोलते हैं। इसलिए उस दिन सब लोग गुरु का शांति होमा करना, जप करना अच्छा है। दूसरा बात है कि इसका तुला राशि का राशियाधिपति है शुक्र। ये शुक्र राहु और सूरज के साथ बैठे हैं 6th घर में। 6th घर इतना अच्छा घर तो नहीं है, फिर भी सूरज भी क्या बाधकाधिपति है तुला राशि लोगों को, है ना। इसीलिए सूरज और शुक्र राहु तीनों मिलकर ग्रहण भी हो गए ना युगादि के पहला। इसलिए शुक्र को थोड़ा स्ट्रांग करने के लिए शुक्र मंत्र जप करना अच्छा है। पैसा के बारे में बोलने वाला और पति के बारे में बोलने वाला है मंगल। ये मंगल शनि के साथ 5th में बैठा है। ये भी एक कॉम्बिनेशन में इतना अच्छा नहीं। पति के साथ आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना, पैसा के बारे में थोड़ा ध्यान से खर्चा करना, बच्चों को भी थोड़ा ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है। केतु 12वां घर में बैठा है नया साल में स्टार्ट होने के बाद। ये तो स्पिरिचुअलिटी प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा है।
Jai Gurudev. Thank you so much, Usha ji. निश्चय जी, can we please talk about Scorpio moon sign, वृश्चिक राशि के बारे में थोड़ा प्रकाश डालें? For Scorpion moon sign people, one thing is best in your chart this year. You will be having lot of blessings for real estate and property, because whenever Saturn, Mars are together, aspecting on fourth house or affecting in any manner in the fourth house, this is the time when property comes to you, or you uh, take the property during this time. But yes, selling a property will be difficult. Acquiring any new property will be easy. So for selling, this is a thing which you should follow. You can go for an exchange, that buying one and selling one. Then whatever you want to sell, you'll be able to sell that. Okay. Second thing regarding your health, the Agni will be in disturbance because the fifth house is having Rahu, Sun, Moon, and Venus together. Back pain usually increases during this time. So if you are having Vata dosha already, please take care of your health. You should chant Rudra mantra daily and meditate on Rudram. Otherwise, your desires and wishes will definitely be troubling you more. Because Rahu, whenever it sits in the fifth house, lot of desires come, but usually it doesn't manifest during this time. So please meditate on Rudram daily. Otherwise, it will be little bit difficult for you to manage and handle your desires. The last thing which I want to tell is about the education. Yes, you will be focusing more on your studies, but at the same time, confusion will arise. So for that, you should not miss your Kriya and any single day. If you are missing the Kriya, then Rahu's effect will increase, and definitely you will be focusing, but still you won't be able to remember. So this is the last thing for you. हिंदी में शॉर्ट में मैं बताता हूँ, आपके लिए प्रॉपर्टीज के लिए ये साल अच्छा है. शनि और मंगल एक साथ चौथे भाव में, इसलिए प्रॉपर्टी खरीदना आसान है और अच्छी प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन प्रॉपर्टी को बेचना मुश्किल हो जाता है. तो अगर आपको बेचना है किसी प्रॉपर्टी को, तो एक्सचेंज पे जाना चाहिए. एक खरीदने के लिए बेचेंगे तो इजीली जो आप बेचना चाहते हो भी सही दाम पे बिक जाएगा. दूसरी चीज, शिक्षा को लेकर के इस साल फोकस तो बहुत रहेगा, लेकिन कंफ्यूजन भी रहेगा, इसलिए क्रिया मिस नहीं करनी चाहिए, वरना राहु का प्रभाव बढ़ेगा और कंफ्यूजन बढ़ते रहेंगे. तीसरी चीज, वायु दोष बढ़ेगा, उस वजह से काफी ज्यादा आपको अग्नि से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है, पीठ में और कंधों में दर्द हो सकता है. तो इसके लिए रुद्रम पे रोज ध्यान करें, रुद्र मंत्र का जाप करें और राहु के उपाय जरूर से करें, जिससे आपके अंदर रोग जो है वो डेवलप नहीं हो. थैंक यू. Thank you so much, Nishcha ji. May we now request Milind ji to shed some light on Dhanu Rashi. Yeah. Sagittarians, the Lord of first and fourth house is Guru, and Lord of 10th house and 5th house is Buddh. They are in conjunction in the 5th house. आप बहुत अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मॉनेटरी गेन के हिसाब से. भौतिक सुख संसाधन जो है उसमें बढ़ोतरी होगी. नौकरी में है तो आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, कहीं से धनराशि इकट्ठा भी आपको आ सकती है. विद्या के क्षेत्र में आप प्रगति एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यू कैन एक्सपेक्ट लॉट्स ऑफ गेन इन द सेक्टर ऑफ नॉलेज, and you can also expect some good news from your children regarding your offsprings. तो ये एक बहुत अच्छा साल आपका जाने वाला है. सिर्फ मेजर डिसीजंस लेते वक्त मंगल और शनि आपके साहस वाले क्षेत्र में थोड़ा सा रुकिएगा, आप दुस्साहसपूर्ण निर्णय ना लें. कई बार हम लोग, क्योंकि मंगल वहां पर एक पराक्रमी ग्रह है, शनि भी है, शनि न्याय करते हैं, लेकिन दुस्साहसपूर्ण निर्णय जो होता है वो जीवन में कभी तो दिक्कत दे सकते हैं. सो इट्स आवर रिक्वेस्ट टू यू टू put a hold on making too early decisions this year. Thank you so much, Milind ji. Coming back to you, Usha ji, if you can shed some light on Capricorn, Makar Rashi के बारे में थोड़ा बताएं. Yes. Those people who are born in Makar Rashi, that is Capricorn moon sign, for them, all this year, since last 6.5 years, Saturn transit was there upon their moon sign. Now, this is the last year of Saturn transits, so something good is going to take place in their life.
And Jupiter is also going to move to the 5th house. They are going to get Gurubal. Something good is going to happen this year for Makar Rashi people. And second thing is that as Saturn and Mars are together, their Rashi Lord as well as Mars in the 2nd house, they have to be very careful while speaking. Whenever you get angry, Makar Rashi people, just close your eyes, take long breath, breathe out, breathe in, and relax. Don't ever open your mouth. You speaking something, and you may enter into a big fight with anybody for that matter, even in family as well. Therefore, you have to be very careful. Otherwise, for Makar Rashi people, everything is good. Ketu being in the 9th house, very good. And Buddha Guru now in the house, 4th house. For education also, it's very good. For students also, things are going to be good in this year. And Surya, Shukra, and Rahu. Of course, Shukra is a Yoga Karaka for Makar Rashi people. Shukra in the 3rd house, Surya being 8th Lord in the 3rd house, and Rahu also in the 3rd house is good somewhat, but Surya in the 3rd house is not that good. So donating things which belong to Surya is good for them, so that misunderstanding will not take place while communicating. हिंदी में बताऊंगी अब. देखिए, मकर राशि लोगों को 6.5 से 7.5 ही चल रहा है. इस साल तो फाइनल ईयर, लास्ट ईयर है, इसलिए प्रॉब्लम थोड़ा कम हो जाएगा. और गुरु भी इस साल मई 1 के बाद में वृषभ राशि में आ जाएगा ना, तब गुरुबल भी मिलेगा. इसलिए मकर राशि लोगों को थोड़ा अच्छा होने का दिन आए, इट हैज कम. और वाक स्थान में शनि और मंगल दोनों भी है. ये इतना अच्छा नहीं है, इसलिए किसी के साथ बात करने के पहला सोचकर बात करना इंपॉर्टेंट है. गुस्सा करके बात करना अच्छा नहीं लगता है, फैमिली में भी अच्छा नहीं लगता है. दूसरों के साथ बात करना भी थोड़ा होशियार से करना इंपॉर्टेंट है. और तृतीय घर में सूरज, शुक्र, राहु तीनों बैठा है. मकर राशि लोगों को शुक्र तो योग कारक है, मगर सूरज तो अष्टमाधिपति है. इसीलिए कम्युनिकेशन करने के वक्त थोड़ा होशियार से करना. और सूरज के लिए, सूरज का चीज है ना, गेहूं ऐसे कुछ चीज दान में देने भी अच्छा होगा. केतु तो 9वें स्थान में है, स्पिरिचुअलिटी के लिए ये भी अच्छा है. और ये पूरा का पूरा साल अच्छा ही है, क्योंकि गुरु का कृपा मिला है अभी. ठीक है. Thank you so much, Usha ji. Now we come back to Nishchay ji. Please थोड़ा कुंभ राशि के बारे में बताएं. Talk about the Aquarius moon sign a bit. Yes, so for Aquarius moon sign people, please take care that this year you need a mentor and you need a proper person who can guide you, because the Brihaspati is there in the 3rd house along with the Vakri Budh, and in the Lagna you are having Saturn and Mars together. So the decisions you are taking will be having a lot of conflicts, and so you need a mentor and a guru to guide you. Second thing, the Shukra is there along with the Rahu, Sun, Moon in the 2nd house, and Rahu there in the 2nd house along with the Mercury being retrograde. So please take care of your speech, because you will be confused, you'll speak something wrong, and then something wrong can happen with you. So this time you need to take care about that. Ketu is there in the 8th house. The hidden enemies can be there this year who are troubling you. So meditating on Muladhara Chakra and always meditating on Ganapati Atharvashesham is recommended for you. Second thing, for you also, you should do some gardening activity and sit in the mud. For environment, anything you do, this will be a good decision this year. Regarding career, mixed results will be there, but definitely you should not decide anything with your own. Okay, you should have a guide or a mentor or a counselor with whom you should discuss. हिंदी में बता देता हूँ कि आपको इस साल कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए. आपको कोई गाइड काउंसलर चाहिए जिस पे आप विश्वास रखते हो, जो आपके लिए निर्णय ले, क्योंकि आप इस साल कोई भी निर्णय आसानी से नहीं ले पाएंगे, या आप जो भी निर्णय लेंगे वो गलत हो सकता है. और दूसरी चीज,
शुक्र जो है वो राहु, सूर्य और चंद्र के साथ में है, केतु जो है अष्टम स्थान में। ऐसे समय में दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो बोलने पे ध्यान रखना है कि बुध भी वक्री है, तो जो भी आप बोलेंगे वो हो सकता है उल्टा पढ़ करके आपको नुकसान दे, तो थोड़ा सा ध्यान से बोलें। दूसरी चीज, खाने पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो आप खाएंगे वो भी ऐसे होगा कि आप कुछ गलत खा करके बीमारी मोल ले रहे हैं, स्पेशली अस्थि धातु यानी कि हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, और दूसरी आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम तो दिखती ही है आपके चार्ट में, जो इस साल डेवलप हो सकती है। मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होगा क्योंकि शनि लग्न के अंदर है, गुरु तीसरे भाव में, तो आपको बहुत सारे आसन करने चाहिए। पद्म साधना रोज से करनी चाहिए 2 बार, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो अच्छा बना रहे। और दूसरी चीज, जो शत्रु हैं वो परेशान कर सकते हैं, खासकर छुपे हुए शत्रु, तो गणपति अथर्व शीर्षम पे हमेशा आप सुबह शाम ध्यान करें, या आता है तो उसका पाठ करें। और वही चीज मंगल के लिए मिट्टी में थोड़ा सा काम करें, गार्डनिंग करें। और कार्तिकेय भगवान की पूजा कर सकते हैं, स्कंद षष्ठी कवच का हमेशा हर मंगलवार को आप ध्यान कर सकते हैं, जिससे कि सब चीजें आपकी लाइफ में ठीक चले। पर आपको इस साल गाइड या मेंटर की जरूरत है, अपने से निर्णय मत लें। थैंक यू। Thank you so much, निश्चय जी. We are coming on the last sign, last moon sign, अंतिम राशि पर है, मीन राशि. तो मिलिंद जी, आप कुछ बताइए, मीन राशि जिनका चंद्र मीन राशि में है उनके लिए साल कैसा रहेगा? चंद्र जिनका मीन राशि में, वो लोग खुश हो जाइए, दिस इज मेरी टाइम फॉर यू। दो दिस इज द लास्ट राशि ऑफ आवर जोडियक साइन, लेकिन इसी राशि में वर्ष प्रवेश हो रहा है। अगर आप एंगर इश्यू को थोड़ा कंट्रोल कर ले तो ये नया साल आपके लिए बहुत कुछ लेकर आया है। सूर्य अपने खुद के कारक वाले स्थान के ऊपर में यहाँ सबसे प्रभावी होते हैं सूर्य देव। भले ही इनके साथ में राहु देव है, कुछ समय डिग्री बदलने के बाद में अपने आप आपके शुक्र और सूर्य ये दोनों मिलाकर आपको प्रसिद्धि दिलाएंगे, हर तरह का ज्ञान दिलाएंगे, हर तरह का आपकी जीवन में चमक बिखेरने का काम करेंगे। तो थोड़ा समय रुकने के पश्चात यही सूर्य और शुक्रदेव पहले स्थान के आपको बेहतरीन परिणाम देने वाले हैं। इसके साथ ही बुध और गुरु, हमारे प्रथमेश जो है, लग्नेश जो है, वह गुरु ही है, जो कि अभी धन के स्थान पर, कुटुंब के स्थान पर है। तो आप अच्छे परिवार के रिश्तों को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। धन की प्राप्ति इस साल आपको हो सकती है, एबंडेंस में वेल्थ भी मिलने के आपके लिए योग है। और आपके द्वादश स्थान में शनिदेव खुद के घर में बैठे हुए, आध्यात्मिक प्रगति आपकी बहुत बेहतरीन होने वाली है। अगर आपके जीवन में गुरु की उपस्थिति है, सशरीर गुरु अगर आपके जीवन में है, तो इतना समझ लीजिए ये साल आपके लिए आध्यात्मिक प्रगति का साल है। जितने भी साधक लोग जिनका मीन राशि है, इस साल you can expect an exponential growth in spirituality in this particular new year. So you just need to curtail your anger issue and wait for some time. That's it. मिलिंद जी, जो शुरुआत में आपने थोड़ा बताया हिंदी में, वो थोड़ा इंग्लिश में भी बता देंगे हमारे सभी दर्शकों के लिए. If you can speak a bit what you spoke initially in Hindi, in English Right. also, it will be very nice. Now, since the ascendant sign is mean, the Pisces, so the presence of Surya, the Sun, and the Shukra, Venus, can bring lots of name, fame in your life. These two planets can bring all sort of abundance, and it can give you nice prosperity also. If we can wait for some more time, when the Rahu crosses certain degrees and it will not give that Grahan effect to Sun, then these two planets are capable enough of bringing lots of good things in your life. Moon also the moon is present in the first house. So if you can handle your mind for some more days, maybe for a month, then probably this coming year is going to be a very nice year for you. Also, those people, those sadhak, those who are having a master in their life, they can expect a nice growth in this spiritual world. And regarding family, the owner of the first house is present in the second house, which is the house of wealth and the family.
so we can develop a nice relation. कहीं पर अगर रिश्ते बदल गए हैं, if you are having if you are experiencing a bitter relationship, this is a good time to patch it up. Amazing. So thank you so much, everyone, Milind ji, Nishchay ji, Usha ji, for taking out time today and enlightening all our viewers on how this new year is going to be. हमारे जो लोग, जो साथी, जो व्यूअर्स थोड़ा देरी से जुड़े हैं, हमने शुरुआत में पंचांग पूरा पढ़ा है। जो आने वाला संवत्सर, क्रोधी नामक संवत्सर है, उसका पंचांग पूरी डिटेल्स दी गई हैं और उसके बाद राशिफल बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि युगादि के दिन पंचांग श्रवण बहुत ही पुण्य का काम है। तो अगर आपने शुरुआत का पंचांग श्रवण छोड़ दिया है तो कल सुबह आप इसको जरूर सुन सकते हैं। अगर आज सुना है तो भी कल सुबह जरूर सुन सकते हैं, क्योंकि युगादि के दिन यानी कल के दिन अगर आप पंचांग श्रवण करते हैं तो इसका कई कई गुना पुण्य फल बताया गया है। So thanks a lot everyone for coming on this channel and blessing us with your wonderful knowledge. Thank you everyone. Jai Gurudev. Once again, wishing everyone a very happy New Year, happy Yugadi, happy Cheti Chand, happy Gudi Padwa. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Is that?